चलो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है आपका स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर है बेटा? स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, पहला पॉइंट है स्लोप ऑफ ए लाइन। पहला पॉइंट क्या है बेटा? स्लोप ऑफ ए लाइन। यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर बेटा हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज दी लाइन। नाउ एंगल मेड बाय दिस लाइन with the positive x-axis is theta. Then this angle theta is called as inclination of the line. इसे हम क्या कहेंगे बेटा? Inclination of line कहेंगे. And if we know inclination of a line, we can easily find slope of that line by using the formula slope m is equal to tan theta, where theta is the inclination of line. And what is inclination? It is the angle made by the line with the positive x-axis, with the positive x-axis. ठीक है, तो अगर आपको थीटा पता है बेटा, so then by using this formula we can easily find slope of that line. हम easily उस line का slope find कर सकते हैं, ठीक है। Now I am taking 2 points on this line, point P whose coordinates are x1 y1 and point Q whose coordinates are x2 y2. Now we know 2 points on the line, and if we know 2 points on the line, we can easily find slope of that line by using the formula slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 y1 are the coordinates of first point and x2 y2 are the coordinates of second point. So if we know 2 points on the line, we can easily find slope of that line by using this formula, that is the second formula. Now suppose equation of this line is ax plus by plus c is equal to 0. टेल मी बेटा, यहाँ पर a b c क्या है बेटा? ये कॉन्स्टेंट्स है। ये क्या बेटा? कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पर वेरिएबल कौन से है बेटा? यहाँ पर x एंड y, ये जो है बेटा ये है आपके वेरिएबल्स। Tell me, what is the degree of x here? It is 1. What is the degree of y here? It is also what? 1. And we know that if degree is 1, that equation is called as what? Linear equation. So this is linear equation in x and y. ठीक है? This is linear equation in x and y. This is what? Linear equation in x and y. And just keep in your mind that every linear equation represents a line. Every linear equation represents a line, because linear इस word में बेटा कौन सा word छुपा हुआ है बेटा? line। ये जो word है ये यहाँ पर छुपा हुआ है। It means that every linear equation will represent a line, and if we know equation of line, we can easily find slope of that line by using the formula slope m is equal to minus a by b. स्लोप m is equal to minus a by b. बेटा ये फॉर्मूला यूज करके हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग 3 formulas फॉर फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए लाइन। फर्स्ट फॉर्मूला इज tan theta, where theta is the inclination. Second formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 y1 are the coordinates of first point and x2 y2 are the coordinates of second point. And the third formula is slope m is equal to minus a by b, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y in the given equation of line. So by using these 3 formulas we can find slope of a line. ठीक है? Next point is slope of parallel and perpendicular lines. Slope of parallel and perpendicular lines, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हो बेटा, लाइन L1। इसका जो स्लोप है बेटा वो है M1। अनदर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, लाइन L2। इसका जो स्लोप है बेटा वो है आपका M2। एंड टेल मी हाउ दीज 2 लाइन्स आर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बराबर है, ये जो 2 लाइन्स है बेटा ये कैसे है? ये पैरेलल है। बराबर है, these are what? Parallel lines. If 2 lines are parallel to each other, they are having equal slopes. तो यहाँ पर हम बेटा लिख पाएंगे
m1 is equal to m2. m1 is equal to what? m2. So just keep in your mind that if the lines are parallel to each other, they are having equal slopes, or if two lines are having equal slopes, they will be parallel lines. They will be what? Parallel lines. ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ये आपका लाइन L1 है, इसका स्लोप है बेटा m1. ये आपका लाइन L2 है, इसका स्लोप है बेटा m2. एंड टेल मी हाउ दीज टू लाइन्स आर. दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो है 90 डिग्री. कितना बेटा? 90 डिग्री है. एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, दैट इज m1 into m2 must be equal to -1. When two lines are perpendicular to each other, product of their slopes must be equal to -1. जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं बेटा, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं बेटा उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए -1. m1 into m2 मस्ट बी इक्वल टू -1. अंडरस्टूड बेटा? यहाँ तक क्लियर है?